Hello students, welcome to the video lecture of Economics Standard 12th. Today we will start with the last topic of this unit, that is importance of elasticity of demand. In the previous topic we have seen some factors that influence to the elasticity of demand. So let's start with the last topic of the chapter, that is importance or significance of elasticity of demand. Now we are quite familiar with the concept of elasticity of demand. What exactly is the elasticity of demand? It is nothing but the responsiveness towards the changes in one factor which causes to the change in the demand. Okay, so the concept of elasticity of demand is of the great importance to the producer, farmer, worker and government. See, these all are the part of the economy, whether they are the farmers, whether they are the producer, whether they are the workers and the government. So Lord Keynes considered this concept to be the most important contribution of Alfred Marshall. See, elasticity is basically the contribution of Alfred Marshall, elasticity of demand. एंड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कीन्स, ओके, लॉर्ड कीन्स का क्या बोलना है कि इकोनॉमिक्स में जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस मिले उसमें से अल्फ्रेड मार्शल, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है. सो सिग्निफिकेंस ऑफ द कंसेप्ट बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एप्लीकेशंस. सो बिलो देयर आर सर्टन importance are given of the elasticity of demand to the different element of the society. Among that, the first one is the importance to the producer. Now who is the producer? Producer is basically a person, okay, who collect all the factors of production. He decide each and every factors of production's quantity before starting the production process. So now how the elasticity of demand or elasticity concept is benefited to a producer, let's see. Even in case of the production process also, the quantity of every factor of production is determined on the basis of their availability. See how every producer has to decide the price of its product. See, producer not only produce the goods, but he also decide how the cost of production can be minimized, and on that basis, okay, he determine the prices of his products. So every producer has to decide the price of his products at which he has to sell it. हर प्रोड्यूसर का एक कंसेप्ट होता है, ओके, कि उसको चीज़ों को सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं करना है, तो साथ ही साथ उसको क्या देखना है कि इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैं कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ, और जिसके बेसिस पे वो क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करता है, जिसके बेसिस पे वो प्रोडक्ट्स क्या है, मार्केट में सेल आउट होते हैं. सो फॉर दिस पर्पज इलास्टिसिटी डिमांड बिकम्स इम्पॉर्टेंट. और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है. जैसे इफ़ द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. देखिए, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाला है उसकी डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक, मतलब जिसकी कितनी भी प्राइजेस बदल जाए फिर भी डिमांड पे असर नहीं होगा. ही विल फिक्स अप अ हायर प्राइस एंड वाइस वर्सा. तो ऐसे समय वो क्या करेगा, चीज़ों की कीमत क्या है, हाई, मतलब ज़्यादा रखेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स अल्टीमेट एम इज़ टू अर्न द प्रॉफिट. ओके, so whenever he design a product, he decide that the prices of the product will be comparatively very high. If the demand for the product is inelastic, he will fix at a higher prices. The concept of elasticity of demand is also useful to the monopolist to practice price discrimination. अब मोनोपोलिस्ट या मोनोपोली ऐसा मार्केट कंडीशन है जहाँ पे प्रोडक्ट को बेचने वाला क्या होता है, सिंगल सेलर होता है. अब सिंगल सेलर है तो ऑब्वियसली देर इज़ नो कॉम्पिटिशन, and if there is no competition, so monopolies tries a different kind of practices which is called as a price discrimination. So what is price discrimination? Price discrimination means charging different price from the different customer for the same product. Okay, so that is the first importance of the to the producer of the elasticity of demand. Then here comes to the second category, that is importance to the government. Now who is the government? Government is an entity, okay, who determine the rules and regulation for the country and all the people and the citizen of the country. So basically there is only one source of, or a maximum source of revenue, okay, that is to the government, that is the tax collection and the penalties. So taxation policy of the government is based on the concept of elasticity of demand. टैक्सेशन पॉलिसी का डिटर्मिनेशन गवर्नमेंट कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सपोज
a particular product whose demand is inelastic, so government try to impose higher taxes on such products, because whatever prices will be there, people are ready to buy it at any cost. So taxation policy of the government is based on the concept of elasticity of demand. Those commodities whose demand is relatively inelastic, okay, ऐसे प्रोडक्ट्स जिसकी डिमांड कैसी होती है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, विल बी टैक्स्ड मोर बिकॉज इट विल नॉट अफेक्ट देयर डिमांड मच एंड वाइस वर्सा. सो अगर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसकी डिमांड कैसे रिलेटिवली इनइलास्टिक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस क्या है इम्पोज करती है, जिससे गवर्नमेंट का क्या है रेवेन्यू क्या है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. सो इलास्टिसिटी also helps to the government regarding the determination of the taxation policy. Then the next thing is important in factor pricing. Now what is factor pricing? Factor pricing means the pricing of the factors of production. For every factor of production we cannot use it at a free of cost, so we have to pay something, a reward or a consideration to them. So in case of the determination of this reward or this consideration, okay, elasticity plays a very important role. See how the concept of elasticity of demand is useful in determination of the factor prices. अलग अलग फैक्टर्स का निर्धारण, कीमत निर्धारण या मुबदला निर्धारण करने के लिए भी क्या है, इलास्टिसिटी मदद करता है. दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. अगर कोई ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसकी डिमांड कैसी है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, कैन कमांड ए हायर प्राइजेस एज कंपेयर टू दोज हैविंग इलास्टिक डिमांड. कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे जिसकी डिमांड क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है, तो वो क्या है, कंसिडरेशन क्या है, मुबदला क्या है, ज़्यादा मांगेंगे एज कंपेयर टू दोज हु आर हैविंग द इलास्टिक डिमांड. फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स कैन आस्क फॉर अ हायर वेजेस इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. वर्कर्स जो प्रोडक्ट्स की डिमांड, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट की अगर डिमांड कैसी है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, मतलब इसके प्राइजेस में बदलाव अगर होता है, ओके, और इन केस गेट द वैल्यू इज लेस देन 1, ओके, डिमांड पे उतना असर नहीं होता है, कितनी भी प्राइसेस बदली या थोड़ा मतलब बदलाव होता है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले लेबर्स क्या करेंगे, ज़्यादा वेजेस की डिमांड करेंगे. देन नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड. देखिए फॉरेन ट्रेड्स, ओके, बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री अगर करना है तो उसके लिए भी इलास्टिसिटी क्या है, मदद करती है. कैसे? द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल टू द डिटरमाइन टर्म्स एंड कंडीशन इन द फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड के टर्म्स एंड कंडीशंस को डिटरमाइन करने के लिए भी क्या है, ये मदद करती है. कैसे? द कंट्रीज एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक कैन रेज देयर प्राइजेस. अगर किसी कंट्री में, suppose we are a country and we are manufacturing a commodity whose demand is inelastic in foreign countries, so we can sell the commodities at a higher prices. okay, जैसे कोई मेडिकल ये है प्रोडक्ट है या कोई पर्टिकुलर कमोडिटी ऐसे जिसकी फॉरेन कंट्रीज़ में क्या डिमांड बहुत ज़्यादा है और वो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, तो हम क्या करेंगे, उसकी प्राइस क्या है कंपेरेटिवली ज़्यादा कोट करके भी क्या है उसको सेल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज दैट इज़ ओपेक. ये ओपेक कंट्रीज़ जो होती है बेसिकली क्या है, क्रूड ऑयल मैन्युफैक्चर करती है, और ये प्रोडक्ट्स की प्राइस कैसी होती है, कंपेरेटिवली रिलेटिवली इनइलास्टिक. ओके, सो हैव इंक्रीज द प्राइस ऑफ द ऑयल सेवरल टाइम्स. द कंसेप्ट इज ऑल्सो यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी ऑफ अ कंट्री. सपोज वी आर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट एंड हुज डिमांड इज इनइलास्टिक, so we can sell it at a higher price to the different country. So that is how elasticity is also help to the foreign trade, because it determines the prices of the commodity which we are going to export or which we are going to import. And the next one is the public utilities. Okay, now what is public utilities? See, public utilities are basically amenities which have been provided by the government to the citizen of the country. In case of public utilities like railway which have an inelastic demand, okay, अब रेलवे की डिमांड कैसी होती है, सो पीपल यूज़ इट फॉर द ट्रैवल पर्पज़, तो इसका फेयर कितना भी बढ़ जाए तो भी लोग क्या है, इसको क्या है, यूटिलाइज करते ही है. सो गवर्नमेंट कैन आइदर सब्सिडाइज और नेशनलाइज देम टू अवॉइड द कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन. इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक तो सब्सिडीज़ देंगी या नेशनलाइज कर देंगी ताकि कस्टमर्स जो है उनका क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको किसी भी तरीके की क्या है तकलीफ ना हो. एंड लास्ट वन इज proportion of expenditure. See, proportion of expenditure also called as importance, okay, to for to the elasticity. See how
if the proportion of expenditure in a person's income is small. ओके, जैसे जो भी अर्न किया जाता है उसका कुछ परसेंट कैसा होता है, स्पेंड किया जाता है, और कुछ को सेविंग किया जाता है टू मीट द फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज. सो इफ द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इन द पर्सन इनकम इज स्मॉल, मतलब किसी व्यक्ति के खर्च उसके इनकम से क्या है, अगर कम है, तो then the demand for the product is relatively inelastic. So he is having a bulk quantity of amount available for the spending. For example, newspapers. Okay, if the proportion of expenditure is large, then demand for product is relatively elastic. मतलब किसी पर्सन का एक्सपेंडिचर क्या है, कंपेरेटिवली अगर ज़्यादा है, ओके, देन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक. ओके, क्योंकि वो क्या है, सेविंग कम कर रहा है और स्पेंडिंग क्या है, ज़्यादा कर रहा है. So that is about the last portion of this particular chapter, that is importance or benefits of the study of micro the concept, that is elasticity to the different element of the economy. Okay, so here our this chapter ends. Okay, then in the next video we'll start with the new chapter, that is supply analysis. Okay, till then, take care.